सत श्री अकाल एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक होने लगा है सुपर रिलेटेबल बट ऑल्सो सो रेलिवेंट इन द टाइम्स दैट वी आर लिविंग टुडे, बिकॉज इन टुडेज वीडियो मैं गल करन लगी हाँ अबाउट what Gurbani teaches us about relationships that time will never tell us. Now sometimes na log they have this thinking that time will heal the relationships, time is the best healer, but the one thing guys is that time हर चीज़ नहीं कर सकता। तुसी किने present हो, तुसी किने connected हो एक दूजे नाल, वो चीज़ा matter करदियां। Because sometimes na guys, you can be with a person for years, you can know them even for a decade, but still you might never understand each other's souls. बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वी मीट समवन एंड दे अंडरस्टैंड अस, दे मेक अस फील इन अ वेरी डिफरेंट वे। ऐसा लगता है दैट टाइम तो नहीं होया बहुत ज़्यादा उन्होंने मिले हुए, बट द वे दे मेड यू फील इट्स समथिंग डिफरेंट, कुछ तो अलग सा फील होता है। सो द रियल क्वेश्चन इज नॉट अबाउट तुसी किसी नू किन्ने साला तो जानते हो, इट्स नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू हैव नोन समवन, इट्स एक्चुअली अबाउट हाउ हैव बोथ ऑफ यू ग्रोन टुगेदर एज अ यूनिट। Deception of the calendar. I think एक ना false sense of security हो जाती है when you look at time as an indicator of how successful a relationship is or is not. There's sometimes ना people say that oh व्यानु 10 साल हो गए, we've been together for 5 years. They automatically assume या फिर the society has conditioned them to assume or believe that जे तुसी किसी दे नाल इतना time रुकी गए हो, रह ही चुके हो, then that marriage or that relationship is successful. But guys पता है बहुत बार की होता है, people, relationships में couples, they stay together for years, even up till decades. But होंदा की है, after a while ना, they don't feel connected in the way they should be. What they should feel if they are connected to each other in a, तुसी कह लो in a spiritual way or in an emotional way also. धीरे धीरे की होंदा है, एक आदत जी हो जाती है। आदत in terms of they start living together as roommates, responsibilities share करते हैं, खर्चे बांट लेते हैं, and that's the way they live life. एक coexistence जी आ जाती है पूरी state. It's not the connection that should be there. And the moment ना in any relationship एक couple is जब spiritual connection ही होता ना, then you tend to question that what is this even. But sometimes ना this illusion, this false illusion that time creates ना, वो सबनों कन्विंस कर देता है दैट ओ येस दिस इज़ अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप, दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप, बिकॉज टाइम एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे देता है दैट इतने साल हो गए अगे भी टाइम निकल ही जाएगा, टाइम तो निकल ही जाएगा, बट वी एज ह्यूमन्स यू आर नॉट सपोज टू जस्ट को एग्जिस्ट विद योर पार्टनर। तुसी यू नो यू गाइज हैव टू शेयर अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक ये जी फीलिंग दैट रब ने ए इंसान मेरे लिए ही बनाया है, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली ना जब तुहाडा पर्सपैक्टिव शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम how long we have been together to how both of us have evolved since we've been together, that will totally change the way जिस तरह तुसी relationships नू view करते हो, जिस तरह तुसी love नू view करते हो। गुरबानी as our mirror in times of conflict. You know guys, मैं एक गल बिल्कुल नहीं कहने लगी हाँ ओ रिलेशनशिप जिदे फाइट्स है वो तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट जिस रिलेशनशिप में जिस कपल में फाइट होती है वो एक्चुअली हेल्दी और सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स हैं। क्योंकि अगर जे तुसी किसी दे नाल फाइट कर रहे हो दैट्स बिकॉज थानू उस बंदे तो कोई होप है, कोई एक्सपेक्टेशन है, तो एक लाइफ जिदे यू नो यू डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ योर पार्टनर, इज दैट इवन अ हेल्दी रिलेशनशिप? प्रॉब्लम ए नहीं है कि तुसी दोनों आपस में यू नो यू गाइज आर फाइटिंग और समथिंग लाइक दैट, प्रॉब्लम ए बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम है दैट योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स दैट कॉन्फ्लिक्ट, दैट आर्ग्यूमेंट, दैट फाइट इज अ लिटिल बिट मिसजज्ड, ओके? बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है दैट वी फोकस ऑन कि लड़ाई हुई क्यों है, वी डोंट फोकस ऑन कि ए लड़ाई मैंने अपने बारे की दस रही है। Because sada na what is our best thing as humans, is our favorite thing rather as humans to do, is that we just want to find the fault in the other person. दूजे बंदे दी की गलती है वो साडी लाइफ दा फोकस रहता है। एंड होंदा की है साडे अंदर सब दे अंदर ना ईगो है जो कूट कूट के भरी हुई है, तो असी की करना है, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट आवर फॉल्ट्स, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स। साडी ईगो यू नो व्हाट विल इट मेक अस डू, दैट इट विल मेक अस डिफेंड आवरसेल्व्स, प्रूव आवरसेल्व्स राइट एंड ब्लेम द अदर पर्सन। बट एक्चुअली साडी गुरबानी ते सानू ए सिखांदी है दैट लाइफ में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट या फाइट है ना, तुसी दूजे बंदे बारे नहीं सोचना, तुसी अपने बारे सोचना है। यू हैव टू इंटरनली रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ, ते तुसी सोचना है दैट what is this situation trying to teach me?
ਇਹ fights, ਇਹ misunderstandings, ਇਹ conflicts ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? You have to focus on that. You don't have to focus on ਇਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ. No. You have to focus on that, okay, what is this fight, what is this conflict trying to teach me about myself? ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ? Because our Gurbani teaches us that ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸਾਹ ਲਓ ਤੇ then ਸਮਝੋ the entire situation ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਲਈ you think about any situation with your ਰੱਬ in your mind ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਤਦ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that okay, my partner is also in this relationship in an equal capacity. ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ. ਬਿਕੋਜ਼ ਗਾਇਜ਼ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ that we're all his children, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ what happens is that we start understanding his divine purpose. So that changes the entire perspective and the way you view your partner. Because ਹੁਣ ਨਾ your focus is not कि मैंने लड़ाई जितनी है, नहीं. It's not even कि मैंने इस argument से सही proof होना है, नहीं. You realize कि जिस रब ने सानू बनाया है ਤੇ ਉਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, that means we are meant to be together. ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ divine light ਦੀ blessing ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ partner ਨੂੰ view ਕਰਨਾ start ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, that's when everything changes, and that's when you see your relationship as one of the biggest blessings of your life. Practicing deliberate presence. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Deliberate presence ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ you're actively trying everything and actively actually being there in your relationship. Not just physically, but mentally, spiritually, emotionally, and in any and every way that exists out there. ਹੁਣ guys, personally ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ that relationships don't end because ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and that's the end of it all. Of course, exceptions ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ situations ਵੀ ਆਤੀ ਹੋंगी ਲੋगों की life में, that's there. But ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ that small things ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, small moments of disconnections, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ small problems ਨੂੰ ignore ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ issue ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, and that those relationships just don't survive. ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ that how do you and your partner start disconnecting? ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ. You are not listening because you want to understand him or her. You are listening कि ठीक है बोल रहे, सुन भी नहीं रहे हो आपको, बट ठीक है बोल दी रहे. You are not even actively being there for him or her. You are not even listening to what they are trying to say. ਤੇ ਤੁਸੀਂ physically ਤੇ present ਹੋ conversation ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, but mentally ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ. So you're actually not even listening to what your partner is saying ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ communicate ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, because they might actually be telling you ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ disturb ਕਰ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ hurt ਕਰ ਗਈ, but ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ. ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? selfless service, where we don't focus on what others will give us, we focus on what we can give to others. ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ you might be thinking ਕਿ ਇਕਨੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ guys that in a relationship also ਨਾ don't focus on ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. No, focus on ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. And that's where you have to actively act on your deliberate presence, ਜਿੱਥੇ you have to actively work on making and building your relationship. अब करना ਕੀ ਹੈ? You don't have to constantly scroll your phone ਨਾ. जब ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਅਕੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, keep your phone away. ऐसा क्या ही हो जाएगा if you do that? Keep your phone away. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ when they're talking ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, because you actually want to know what they're talking about. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, not ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਦ ਚੁੱਪ ਹੋਏਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦ ਬੋਲਾਂਗਾ, not because of that. Actively ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, maintain eye contact so that she or he feels trusted and also cared for. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ yes, my partner actually understands me and they want to know me. They do more of such activities that will make your partner feel not only comforted and secured but also protected and loved. ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ sacred space ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ relationship is also your sacred space. So these are the small things that you can do to not only build your relationship but also to help it grow, but also to make it a sacred space not just for you but for the both of you together. Building a connection that is based on Rab Di Marzi. ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ in society, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ if you talk to couples ਨਾ, they will measure their relationship in terms of years ਤੇ milestones. ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ just celebrated a golden jubilee or silver jubilee and more of such achievements. ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਾ guys, ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, obviously you guys will grow together. But ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ perspective shift ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ from see you have to grow together because we are married is not the correct way. It is because
we are growing together because ਅਸੀਂ we want to grow together. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. There's no force on you. It's no necessary condition. It's because you want to. Then how does that happen? When you are there with each other, not just because of social reasons, not just because of societal reasons, but also spiritually. एक emotional connection हो जाता है एक दूसरे नाल, where you help each other to grow by being more compassionate. ਤੁਸੀਂ अपने faith ਨੂੰ बड़ा important बना लेंदे हो for the both of you. You try to work on each other as human beings, they also grow together as a couple. You work on the relationship you have with your Rab. You have conversations with your Rab as a couple. ਤੇ your goals are not कि society ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ. It's that ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ you know that ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. And that's when your entire focus shifts from growing together to actually growing together in a way where you guys are evolving, growing, glowing, being happy and being so like comforted and protected and feeling so secured in the presence of each other. क्योंकि hun focus है नहीं है कि oh ਅਸੀਂ you know we have to be together. Hun focus है that how do we help each other to become the best versions of ourselves. They also to live a life that is based on our Rab, on our Gurbani. They also on following his hukum. ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ stop waiting for time to heal. ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ heal ਕਰਨਾ ਹੈ. Because time ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ relationships ਨਾ ਕੋਈ depth ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ connection ਆਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਭ you have to put in conscious efforts to build your relationship, to grow your relationship, to help your relationship to evolve. They don't wait for the perfect time because time te you know the moment ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਸ moment ਤੇ ਜੋ that moment is perfect. You just need to start putting in efforts to build your relationship. Because a happy marriage or a happy relationship is not about ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲੋਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ. It's about ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ. How you guys are growing together spiritually ਤੇ emotionally. So this is not something you do once a week ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਤਾ. These are the choices you make as a couple every single day of your life. Daily things, daily steps and daily practices that you do. Because happiness in a couple is a choice. ਤੇ ਉਹ choice ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ but you just have to work on it. आज का वीडियो अच्छा लगा तो जान तो पहला प्लीज सब्सक्राइब करना एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. प्लीज लेट मी नो तुसी होर यू नो व्हाट आर द टॉपिक्स यू वुड वांट मी टू टॉक अबाउट. आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.